Hello, everyone. Am I audible? Anyone would reply? Am I audible? Started. Everyone, back to CAX. So, as per our EPs, we are continuing with the geography of Odisha. Okay, and today we will be doing drainage system. Now, last class रे ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ drainage and physiography will take some time. So, drainage ର ଦୁଇଟା class ହବ. Today is part 1. Okay. Next class रे हमें part 2 करिया. Now, part 1 रे we will be today discussing some concepts. Okay. And in the next class, in the part 2, we'll be doing mapping of results. Okay. So, दीटा पार्ट रे हमें क्लास करिवा. गोटे होची बस हमें conceptual clarity नवा about rivers, basic जिनस जानिया. Then next class रे we'll talk about the mapping aspect. Okay. And जो मानंगु पीडीएफ वगैरह रा डाउट्स अच्छी कि कोठी पीडीएफ मिल कौन होची and daily updates दरकार, not just about geography class, any other class. You can join both of these telegram channels. सेटा मोर पर्सनल एटा होची कोचिंग रो, so join the channels. Okay, चलो. now first जिनस हमें आज डिस्कस करबा about the what do we mean by drainage, right? हमें बहुत जगह तुम देखियो रिवर्स ऑफ ओडिशा लिखा है. रिवर्स जगह रे बहुत जगह तुम मन देखियो ड्रेनेज टर्म, राइट? ड्रेनेज सिस्टम और ड्रेनेज बेसिन, ये सब जो टर्म लिखा है ये जिनस ओरा तुम देखिया को पाइथो बहुत जगह. ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज बेसिन, कैचमेंट एरिया, तापर हमरो ड्रेनेज डिवाइड, वाटरशेड, ये सब जिनस कोन. फर्स्ट विल टॉक अबाउट दैट, देन विल मूव इनटू द नेक्स्ट सेक्शन. ठीक है जी. बेसिक जिनस जदी न बुझिबो तो किछि फायदा ही, राइट? हमरो ड्रेनेज सिस्टम कोन. लेट्स अज्यूम कि एटा होची गोटे एरिया अछि. ठीक अछि. ऑब्वियसली रिवर रो जो गोटे रिवर क्रिएट होची, इट कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, राइट? तो से जो डिफरेंट एरिया रहउची, से एरियाटा इज इंक्लूडेड अंडर दिस. ओके, लेट्स अज्यूम कि रिवर रो स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस. ई पॉइंट रु ही रिवर टा हमरो स्टार्ट हिची. रिवर तार एमती आसला, झटक के मटक के झटक के असला. दिस इज द मेन रिवर. ओके, एटा को हमें कोन कहूचे? दिस पॉइंट, the red one, is called as the source of the river. Source or
origin जो पॉइंट रू स्टार्ट हेची रिवर एटा लाइक वेरी इजी जानी थिवो जो पॉइंट रे रिवर एंड हला सेटा को हमें कोन कहूचे द माउथ ऑफ द रिवर राइट सोर्स एंड माउथ वेरी बेसिक पिला बेलू पढ़ी आस्थिवो नेक्स्ट कोन हला रिवर रो आउ गोटे जिंस जो जोटा तुम माने ऑलरेडी जानी छो राइट सेठी किछि हमर डिस्कस करिया कोन ना तार किछटा एमती ट्रिब्यूटरीज थांती राइट that come and join this river the tributary ro भी किछटा ट्रिब्यूटरी थाई पारे राइट रंग कर so these are the tributary एटा भी जानि छिवो तुम माने पिला बेलू ट्रिब्यूटरी रो ना सुनथियो शाखा नदी राइट आ गोटे जिंस कोन जानिछो पिला बेलू ना रिवर जते बेले माउथ पाखु को आसे सेही पॉइंट रे हमें रिवर टार हां आ गोटे जिंस एटा भी तुम माने बेसिक ज्योग्राफी रे पढ़िथिवो रिवर रो एज अछि राइट जेमती हमें ह्यूमन लाइफ को डिवाइड करछे रिवर रो लाइफ को भी किछटा पार्ट रे डिवाइड कराइ छै कोन and this is youth stage next होची a mature stage out as the old stage right now when the river reaches its old stage से पॉइंट रे कोन होता है ना रिवर भितरे बहुत एनर्जी कमी जाई था एंड ए एनर्जी कमी वाला रीजन कोन स्लोप टा कमी जाई था प्लेन एरिया को आस जाई था ना तो स्लोप कमी जाई था ता से तो कोन था तादरे सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है एक्सपीरियंस सारा बढ़ जाता है ए हिसाब रे भाबी this sedimentation increase and reduction in energy results in the river depositing the sediments जोटा क्रिएट करे हमरो डेल्टा ए डेल्टा क्रिएशन जो ही रिवर टा कहू डिवाइड हो जाए इनटू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर ओके तो रिवर टाइम ती भांगी जाए सेगुरा को हमें कोन कहूचे दैट डिस्ट्रीब्यूटर ओके तो कोन कहली सोर्स रू स्टार्ट हला रिवर मेन रिवर असला तादरे मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज जॉइन हेले ओल्ड स्टेज रे पहुंची की तळे सी माउथ रे पहुंचला कहला ना रिवर क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूट ता सहित आमे से जगह रे डेल्टा भी पाउछ राइट नाउ इडा होछ गोटे बेसिक रिवर रा स्ट्रक्चर ठीक अछि कोन कोन तार सेक्शन रहला या देरे हमें देखिबा एक्स्ट्रा जिंस कोन रहउछ राइट फर्स्ट जीवा हमें ए रीजन टायर रीजन ता रहउछ जोटा मु रेड रे मार्क कर this is known as the drainage basin ड्रेनेज बेसिन कौन ना जो नमस्कार सौमित तो ड्रेनेज बेसिन रो माने कौन ना जो एरिया भितर देखो वर्षा है कि रिवर रे वाटर जाउची और कोठू गोटे ग्राउंड वाटर सोर्स रू रिवर को बाहरुची ग्लेशियर मेल्ट है कि रिवर क्रिएट होची दीज आर द डिफरेंट सोर्सेस राइट तो ए जो सोर्स रू पानी आसुची जो एरिया रू पानी आसी कि रिवर रे मिसुची देखो कहला ना ए जगह रे वर्षा हला राइट ये जो वर्षा होची ता पानी टा आसी कि सब रे मिसियो ना नहीं ट्रिब्यूटरी रिवर्स रे एंड से ट्रिब्यूटरी टा आसी कोथरे मिसु मेन रिवर रे सिमिलरली ए जगह रे भी वर्षा हेले दिस विल एंटर इनटू द रिवर सेम गोस फॉर हियर तो
एनीवेयर विद इन दिस रेड पार्ट आमे देखुचे जे रिवर को वाटर टा सप्लाई हो राइट तो सेई जो एरिया भितर हमर एवरी लाइक सबू पानी जो से जगह रे क्रिएट होउची सेगुराक रिवर भितर पसुची राइट बेसिकली कौन ना it is the area or the region where all the rainwater or all the surface runoff supplies the source of the river okay सेई जिनसटा होची हमर ड्रेनेज बेसिन जो बड़ एरियाटा जो थ्रू की सबु किछि पानी आसिक हम रिवर रे मिसुची ओके जेतक सरफेस रन ऑफ रहिला ऑलमोस्ट एवरीथिंग जोरा कि पोखरी पोखरी रे रहि जाउची सेगुरा का इग्नोर कर दियो तो बाकी जहा सब रहिला सेगुरा का आसिक रिवर रे मिसिबो ओके सेटा होची हमें कहूचे ड्रेनेज बेसिन नाउ सेही रिलेटेड तमे आ गोटे जिंस सुनथिबो कोन ना कैचमेंट एरिया ओके तो कैचमेंट एरिया कोन किछि गोटे देखो ड्रेनेज बेसिन हला एंटायर रीजन फॉर द रिवर कैचमेंट एरिया होची इट इज द स्मॉलर स्केल ठीक अछि तो लेट्स से ए पॉइंट रे हमकु जने पचारला लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए जने कहला लोकेशन ए रे तार कैचमेंट एरिया टा कोन ओके नाउ सेई जो पॉइंट को जो एरिया रो पानी आसुची सेईडा हमें कहबा कोन ना ए रीजन रो पानी आसला राइट एंड ए रीजन रो पानी आसला सो ऑल द वाटर फ्रॉम द मेन रिवर प्लस लेट्स से दिस इज ट्रिब्यूटरी बी द ट्रिब्यूटरी बी आउ मेन रिवर रो जतको पानी आसला जो एरिया रो पानी आसला से एंटायर एरिया टाको हमें कोन कहबा ए रो कैचमेंट एरिया ठीक अछि so that is the difference between drainage basin and catchment area good evening payal namaskar panchanan understood drainage basin now catchment area are difference next ebe imagine karo eta mu draw karchi jo this is a mountain range this part is actually the top of a mountain range same goes for this mountain range हे पारे plateau हे पारे किछि भी गोटे elevated land ठीक अछि जदि ए जो माउंटेन रेंज रहिला तार राइट साइड रे एई जगह रे सब वर्षा हला कोठी भी वाटर कोठी की जीवो रिवर को जीवो रिवर लेट्स से एक्स ओके रिवर एक्स को जीवो सब पानी राइट बट जदि एई साइड रे वर्षा हला माउंटेन रेंज रो देखो माउंटेन रो एई साइड रे वर्षा हला एठी वर्षा हला तो कोन हबो पानीटा को एमती डेंगी पळेबो जीवनी तो पानी विल फ्लो लाइक दिस तो जदि एपट साइड रे वर्षा हबो this will flow like this तो कोन हला एपटे वर्षा हेले it flows into river x तो एठी जदि लेट्स से गोटे रिवर y जाईची एई पॉइंट रे जदि वर्षा हबो हमर एवरी वाटर विल गो इनटू दिस ओके तो कोन हला ए जो रिज टा रहिला हमर से रिज कोन करची रिवर x आउ y रो सोर्स को डिवाइड करची दैट इज व्हाट वी कॉल एज ड्रेनेज डिवाइड एटा को आउट टर्म रे कोन कोंती watershed okay so horn कौन horn सोमित okay so this is the drainage divide or watershed region okay बुझा पड़ला एति जो बेसिक टर्म जो चारटा मु हां आ गोटे टर्म रह गला ड्रेनेज सिस्टम ओके watershed फाइनली हमर जेतक सबु एरिया रहिला दिस एंटायर सिस्टम ओके तो जो okay this entire system okay all these concepts include
all these terms in drainage basin ho, watershed ho, tributary, distributary, mouth, source, river course, everything included comes under what? Drainage system. The entire thing is called as a system. Okay, आम सिस्टम रे काम करूछु कोन सेही भलिया तो सिस्टम दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड एज ड्रेनेज सिस्टम बेसिक. ओके ओके क्लियर नाउ. ओके जदि काहा को स्क्रीनशॉट नै कि रखियार अछि रखि दियो 2 सेकंड पे साइड हे जाउची because due to some constraints amaro annotated ppt तो तुमको मिली पारने so keep it okay hopefully हे जाइछ स्क्रीनशॉट. लेट्स मूव नाउ. नेक्स्ट होजी हमें ड्रेनेज सिस्टम विषय रे पढ़ले राइट. तो ड्रेनेज सिस्टम रो डिफरेंट टाइप्स भी अछि. ओके नाउ व्हाट आर दीस डिफरेंट टाइप्स. तो ड्रेनेज सिस्टम को मैं टोटल दीटा टाइप रे डिवाइड कर. ओके first type is called as the concordant or sequent drainage. Okay. Next one is discordant. Discordant. Eta को कौन को आवे also known as insequent. Okay. Okay. So sequent also other one is insequent, concordant, discordant. Theta का opposite. Okay. Now theta का difference कौन? Now this is based on the topography, river course से सब basis रे category टा बनाई थी. कौन category? ना basically class रे किछिटा student अछंती जो माने कि obedient student से माने आसी जिवे concordant category. आउ किछि जण अछंती जो माने कि disobedient student से माने आसी जिवे discordant category. now obedient काहा को हेबे river माने river will obey the topography. okay जो एरिया रे फ्लो करूची सेही एरिया टा को ओबे करिवो. now कोन हबो ना गोटे माउंटेन एमती अछि रिवर टा ता ऊपर एमती फ्लो करूची तो रिवर इज फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू द माउंटेन. now माउंटेन टा एमती हे गला तो रिवर कोन हबो एमती आसी कि इट विल टर्न सीधा जीवनी कि कोन करियो बुली जीवो कारण माउंटेन सर कहले जे रिवर स्टूडेंट तमे एमती बुली जीवो तो रिवर इट टर्न्स लाइक दिस. एग्जांपल कोन और इंडिया रे इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर, these are examples of concordant or sequent rivers. okay both these rivers तमन जानि थिबो जे they are originating on Tibet side right. तो Tibet रु इंडस रिवर एमती आसुची ए डायरेक्शन में आसुची देन एमती बुली जाउची राइट. सिमिलरली हमरा ब्रह्मपुत्र ए भी एमती बाहरुची then it changes like this right. so here and here नंगा पर्वत पाखरे एठी and here नामचा बारवा ए दीटा का रीजन रे हमर कोन होची ना both the rivers because we are witnessing हमर हिमालयस रे गोटे सिंटैक्सियल बेंड बली विटनेस करछे because of that both the rivers are obeying the bend in the Himalayan systems and से हिसाब रे से माने निजे भी बेंड ही. okay so these are the two types of कोन कहबा ड्रेनेज सिस्टम. now ए जो दीटा को टाइप रहिला तार किछटा सब टाइप भी अछि. okay
कंकॉर्डेंट और सीक्वेंट ड्रेनेज को हमें चारटा सब कैटेगरी रे डिवाइड करियो ओके कौन कौन ना फर्स्ट वन इज consequent, next one is subsequent, third one is obsequent, and the final one is resequent. Okay, so these are the four types of river or the four types of drainage systems that come under the sequent category. Okay. तापरे डिस्कॉर्डेंट रे कौन रहबो डिस्कॉर्डेंट रे हमें दीटा सब कैटेगरी बनै छै कोन होउची एंटीसीडेंट आउट होउची सुपर इम्पोज okay so these are all the categories of drainage system that we witness okay now see here तो कौन होची consequent river जोटा हमें कहते एटार कौन रहउची ना this is the consequent right main river टा जाईची okay now consequent river होची it is the first river that originates in the region okay गोटे region अछि जोटा रे की river माने से टोपोग्राफी को फॉलो करछन सेही region रे जो river टा first originate हिची जोटा main river बोली हम कहू that is the consequent river okay subsequent कोन subsequent ता पर generate okay so this is the second river that is generated after the consequent river and subsequent is the tributary to the consequent rivers okay तापर क्रिएट हेची बाकी दीटा को जोटा की obsequent कहूचे and resequent कहूचे obsequent ता कोन ना it is flowing opposite to the main river consequent river रा opposite direction रे flow करछ एठी देखो river ता कोन हिची एमती आसी की मिसी जी with the subsequent river एठी देखो आउट obsequent ए river रा opposite direction रे आसी की subsequent रे मिसी छी right resequent this is the most recently created river and obsequent and resequent both are tributaries of subsequent river okay so subsequent होची consequent रा tributary resequent और obsequent होचंदी subsequent रा tributary बुझी पारलो okay basic सरियला काम next होची antecedent next होची हमरो antecedent river okay antecedent river केस रे कोन होची ना देखो antecedent आउ sorry in case of our insequent river or discordant river सेठी कोन होची ना it does not obey the topography okay topography को एटा माने so this is a disobedient student तो माउंटेन एमती हे की बनिची okay तो रिवर टा एठू एमती फ्लो करके आसले it should go like this if it is obeying the mountain right एमती आसी की एमती बुली की जीवो बट से कोन करिवो एठी आसीबो ए माउंटेन भितरे गोटे होल कर देगी इरोजन कर देगी माउंटेन को काटी की पळेबो गॉर्ज क्रिएट कर दो दैट इज द डिस्कॉर्डेंट रिवर पूरा माने कलिंग संढ राइट काहा को मानिवनी माडी चलिवो सो दिस इज द डिस्कॉर्डेंट रे कोन होची ना हमरो एंटीसीडेंट गोटे अछि एंड सुपर इम्पोज गोटे अछि एंटीसीडेंट रे कोन होची ना रिवर is created first ता हमरो गोटे लैंडफॉर्म रहिला एठी ता ऊपर रिवर ता हमरो जाउछ
तापर ड्यू टू सम रीजन देखो सेम तीनटा केस एठी देछि रिवर जाउची लैंड अछि रिवर जाउची लैंड अछि ओके फॉर सम रीजन फोल्डिंग हो फॉल्टिंग हो डिपोजिशन हो जहाँ भी एनी काइंड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटी वोल्केनिक एक्टिविटी की माउंटेन बनी गला एनी एक्टिविटी टेक्स प्लेस which results in the upliftment of the land ठीक अछि तो ए जो चारियाडी यार लैंड अछि तार अपलिफ्टमेंट होची बिकॉज़ या अंडर रे देखो फोल्डिंग होबाक जाउची तो फोल्डिंग हे की लैंड ता अपलिफ्ट होबाक जाउची ए जो अपलिफ्टमेंट होची सेईटा जो कोन होबो ना ऑब्वियसली जदी रिवर ए जगह रे माउंटेन गोटे एमती उठी गला रिवर ता जदी हमर सीक्वेंट रिवर हितांता एमती बुली जाइतांता डायरेक्शन बट हियर कोन करिवो से डिस्कॉर्डेंट रिवर रे कोन करिवो जो रेट रे लैंड ता ऊपर को उठिबो सेई रेट रे रिवर डाउन कटिंग करिवो so land is created second and river cuts the land okay river कोन करिवो इरोजन कर दबो लैंड रो जतबले लैंड ऊपर को उठी जो रेट रे लैंड ऊपर को उठुथो सेई रेट रे रिवर तार इरोजन कर चलथिवो and it will result in the creation of such kind of topography जोटी कि हमें बहुत सारा गॉर्जेस देखिया को पाइबा ओके सिमिलरली हमें देखिया को पाइबा द नेक्स्ट कैटेगरी कोन जोडा होची हमरो सुपर इम्पोज्ड केस रे कोन होची ना लैंड फॉर्म आगुरु अछि लैंड इज फर्स्ट ओके तो एट देखो बेसिकली कोन हेची ना ए लैंड फॉर्म ता हमरो जो फोल्डिंग वगैरह है की माउंटेन क्रिएट है की थिला ता ऊपर ओवर टाइम डिपोजिशन है कि गोटे प्लेन एरिया बन जाइछि सेई प्लेन एरिया ऊपर कोठु गोटे रिवर आसी की रिवर क्रिएट हेगा तापरे कोन करिवो रिवर धीरे धीरे इरोजन करिया स्टार्ट करिवो सेई जगह रो भी लैंड रो इरोजन विंड वाटर सब जगह रे इरोजन हे चलिवो तापरे कोन हबो ना जतोले इरोजन हे जाउची रिवर विल स्टार्ट टू डाउन कट ये जो डाउन कटिंग करिया स्टार्ट करिवो this will create such kind of gorges same जिंस फीचर ता सिमिलर रही बट एठी कोन लैंड फर्स्ट रिवर सेकंड ओके सेठी थिला उल्टा केस अंडरस्टूड क्लियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन एटा हला हमर ड्रेनेज सिस्टम रो डिवीजन ओके कैटेगरीज कोन कोन रहला आ गोटे जिंस अछि ड्रेनेज पैटर्न तो ड्रेनेज पैटर्न कोन ना बेसिकली हमें जदी गोटे ड्रेनेज सिस्टम को टॉप व्यू रु देखिबा सेटा को पैटर्न क्रिएट करछि सेटा होछि हमर ड्रेनेज पैटर्न ठीक अछि बस बेसिक सेति की आउ किछ नै ता बेसी पीएचडी करिया दरकार ड्रेनेज पैटर्न होछि सेति हां ड्रेनेज पैटर्न रा डिफरेंट टाइप्स अछि जोडा हमकु देखिबार अछि कोन ना फर्स्ट टाइप होछि डेंड्राइटिक पैटर्न जोडा की तम माने पिला बेलु पढि आछो ए ड्रॉ करि आछो ओके कोन ना दिस appears as a tree and its branches okay so मोर मेन रिवर एमती जाइथो तापरे कोन हला तादरे गोटे ट्रिब्यूटरी एठी कनेक्ट हला एठी आ गोटे ट्रिब्यूटरी कनेक्ट हला आ गोटे एठी कनेक्ट हले से ट्रिब्यूटरी मानन देरे भी ट्रिब्यूटरीज थिबे राइट ट्रिब्यूटरीज रो भी ट्रिब्यूटरीज थाई पारे कोन भलिया देखा होछ गोटे गच्छ भलिया देखा होछ ना तुम जदी ए डायरेक्शन एडा को एंदी रोटेट कर दो गोटे गच्छ भलिया देखा जाउछ ना so this is the dendritic pattern okay then next होची हमरो trellis pattern okay now trellis pattern drainage रे कोन रहइबो ना ए जगह रे
river is flowing like this, तार ट्रिब्यूटरी सबू परपेंडिकुलर आसिकी जॉइन कर नियरली परपेंडिकुलर एमती आसिकी जॉइन कर ईच ट्रिब्यूटरी माने भी परपेंडिकुलर रे जॉइन कर ओके तो ए टाइप रो पैटर्न जोटी देखियो सेटा होची हमर ट्रेलिस पैटर्न ट्रेलिस पैटर्न रे कोन होची ना एई पैटर्न टा हमें मोस्टली देखु जे को जगह रे जो जगह रे पैरेलल माउंटेन रेंज तो कौन हम ए माउंटेन रो एंदी परपेंडिकुलर आसीबे ए माउंटेन रो एंदी ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर आसीबे तो रिवर रो वाटर रो फ्लो टा केमती होथो जानि परथो देन कौन हम ना सब तक पानी मिसला पर सेमान तो को गोटे डायरेक्शन में जिवे so that is they are coming in this direction parallel ranges of mountain rahibo okay so this is trellis pattern clear then your next is angular drainage system angular drainage system नारू ही जणा पड़ जाउथो जे एटा गोटे एंगल रे जॉइन करछि and that angle is the acute angle जोडा हमें एबे ड्रॉ करिके देखिले ओके जो डेंड्राइटिक पैटर्न एटा गोटे टाइप रो एंगुलर ड्रेनेज सिस्टम ओके तो acute angle रे आसी की जॉइन करछन्ती दैट इज द डेंड्राइटिक पैटर्न डिफरेंस बिटवीन डेंड्राइटिक पैटर्न और एंगुलर पैटर्न कौन होबा एंगुलर पैटर्न अंडर रे एमिति भी आसीबो रिवर गुराक जो गुराक रे ओनली गोटे गोटे ट्रिब्यूटरी भी थाई परन ओके दिस आल्सो विल कम अंडर एंगुलर पैटर्न ता सहित डेंड्राइटिक हे गले भी विल कम अंडर एंगुलर पैटर्न ओके देन सेई एंगुलर पैटर्न रो किछिटा अलगा स्पेशल कैटेगरी कोन ना गोटे होची रेक्टेंगुलर पैटर्न सेटा बेसिकली कोन होबो मेन रिवर भी जोठी टर्न नहीं थो ना मेन रिवर रो बेंड गोरा केमती 90 डिग्री रही थो ता सहित हमर ट्रिब्यूटरीज गोरा जो रहिले से माने भी एमती 90 डिग्री रे बेंड ही के आस्थिबे एंड 90 डिग्री रे ही जॉइन करथिबे so this is the rectangular pattern okay then next gote modified form kon that is the parallel pattern एथरे कोन रिवर गोराक tributaries गोराक they will somewhat run parallel to the main river so in the parallel ही किसी रहला this river will go more or less parallel then गोटे जगह रे join this will go more or less parallel then गोटे जगह रे join तार भी सेमती parallel ही जाइथिबो join okay it will be somewhat like this एटा होची हमर कोन रहइबो ना parallel pattern okay parallel drainage pattern next होची radial pattern केस रे कोन हो गोटे elevated land रहला okay
ସେଇ land ରୁ different rivers ଏମିତି ବାହାରିବ, go like this, will come and go like this, ଗୋଟେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଏମିତି ଆସିକି, ତ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରୁ river ବାହାରିକି ଚାରିଆଡେ spread out ହେଇକି ଯାଉଛି। So if we view this from top view, okay, ଉପରୁ ଯଦି ଦେଖିବା it will appear somewhat like this, ଏଇଟା mountain ର top ଦେଖାଯିବ, ତା ଦେହରୁ each direction ରେ ଏମିତି river ବାହାରୁଛନ୍ତି। So they are moving in which direction? जदि आमे एई माउंटेन टाकू सेंटर बने गोटे सर्कल बनेइबा ता चारिपटे, तो कौन हला? These are moving along the radius, सेति पई एटा को कहा जाय रेडियल पैटर्न। ठीक अछि, देन नेक्स्ट नेक्स्ट होची सेंट्रिपिटल, तार जस्ट ऑपोजिट कोन, एमती गोटे रहला एरिया, ता देरे कोन होची रिवर गुराक सब सेंट्रल डिप्रेशन रे आसी जॉइन होचन, एटी गोटे मे बी लेक अछि कि इनलैंड सी अछि, तो रिवर गुराक एमती आसी जॉइन होचन। ओके, तो दिस इज सेंट्रिपिटल, सेंटर को से माने आसुचन। ओके, नेक्स्ट कोन, नेक्स्ट होची एन्युलर पैटर्न। एन्युलर पैटर्न टा केमती देखा जिवो कहल, माने गोटे टाइप रो कहि पारो मॉडिफाइड सेंट्रिपिटल, दिस इज अगेन सर्कुलर मोशन। कोन होची ना हमरो गोटे माउंटेन रहला, माउंटेन रो ऊपरू रिवर एमती फ्लो करके आसु, तापर कोन हला गोटे पॉइंट रे किछि गोटे डिफॉर्मेशन हिची कोन हिची, द रिवर मूव्स लाइक दिस, देन पुनी तळु को आसु, देन एमती सर्कुलर हेकी गला, पुनी तापरे ए पॉइंट रो एमती एमर्ज करके एठी तळु को आसला, देन एमती हेकी गला। ओके, देन पुनी तळु को आसला, पुनी एमती सर्कुलर हेकी गला। तो आमे जदि टॉप व्यू रो देखिबा, इट विल अपीयर समवट लाइक दिस। सर्कुलर पैटर्न रे रही मोर अप्रोप्रिएट समवट, तादरे तारा ट्रिब्यूटरीज भी किछटा किछटा जॉइन हिथिबा आसी, राइट। So this is what a annular pattern looks like. Annular pattern ता कोन पई ता ना टाइम कोन पई, it somewhat looks like a ring कि नहीं, एमती गोटे सर्कल गला, ता भीतर आ गोटे सर्कल जाई छी, तो गोटे रिंग भलिया देखा जाउची, तो सेति पई सेटा को हमें एन्युलर पैटर्न बोली कहूचे। ओके, with this we are done with the different types of pattern। ता सहित किछटा अलग अलग पैटर्न अछि, नॉट वेरी इंपोर्टेंट, गोटे अछि पिनेट, एटा कोन हबो ना रिवर टाइम दि जाई छी, तादरे डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज आसी की लागि छन। हाँ, एठी जदि आमे जो एंटायर रिवर ड्रेनेज सिस्टम टा रहला, एटार जदि आमे गोटे आउटलाइन बनेइबा, सोर्स टू स्टार्ट हो से आसीबो, माउथ रे पहुंचो, सोर्स रू आसीबो, माउथ रे पहुंचो, व्हाट डज इट लुक लाइक, लुक्स लाइक अ लीफ, राइट, पत्र रो सब वेन्स वगैरह थाए, राइट। तो एई जो पैटर्न टा रहला सेटा को हमें कहूचे कोन, हां पिनेट ड्रेनेज पैटर्न।
ठीक अच्छे। सिमिलरली आउ गोटे अच्छी ता ना हूँ बार्ड ड्रेनेज पैटर्न। बार्ड बार्ड ड्रेनेज रो कौन ना रिवर मेन रिवर जाउची एमती मेन रिवर एमती गला ट्रिब्यूटरी आसीबो तार आसला एमती से कौन करिवो से कहबो मु नॉर्मल लोक मु सीधा हाथ रे खाइबिनी मु एमती बुलेई कि तो से कौन करिवो एमिति जॉइन न कि will join something like ओके सिमिलरली आउ गोटे एमती आसला से भी एमती जॉइन करिवो तो तुमको कौन लागुची ए जो ट्रिब्यूटरी रिवर रहिले ए आउ बी से माने मेन रिवर एक्स ऊपर एमती गोटे हुक लगेई कि ओळी कि अछंती बलिया देखा होउची ना तो सेही जिंसटा होउची बार्ड ड्रेनेज पैटर्न ओके सिमिलरली आउ गोटे अछि डिरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न डिरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न तो एटा कोन ना एटार नो फॉर्म गोटे रैंडमली बनी जोटा कि आमे किछि गोटे फिक्स्ड कैटेगरी भितर को नहीं पारुने सेटा होची डिरेंज्ड मुंड खराब तो सेमती मुंड खराब वे रे रिवरटा जाईची जे आमे गोटे किछि पैटर्न देई पारुने सेटा को तो सेटा को आमे कहूचे डिरेंज्ड ड्रेनेज पैटर्न ओके तापर रहिला हमर कोन ना हमर बेसिक कांसेप्ट सरी गला नेक्स्ट हमर जिबा हमकु कोठी की रिवर्स ऑफ ओडिशा ओके जो रिवर्स ऑफ ओडिशा रहिले हमर ओडिशा रे केतेटा मेजर रिवर अछंती की कहि परिबो मेजर रिवर केतेटा एनीवन ओडिशा रा मेन रिवर केतेटा बहुत सारा रिवर सिस्टम अछि छटा कोन कोन obviously we have the महानदी then ब्राह्मणी बैतरणी then आउ कोन रहिला को महानदी ब्राह्मणी सुवर्ण ऋषि बुढ़ा हो तो महानदी ब्राह्मणी बैतरणी सुवर्ण रेखा ऋषिकुल्या एंड फाइनली बुढ़ा बलंग राइट तो तुमको कौन काम रहा आज मन रखियो ये आज आम रहा ओके आज कौन मन रखियो ना ये जो रिवर गुराक रहा तार ऑर्डर कौन तो फर्स्ट आम देखुचे सुवर्ण रेखा ओके नेक्स्ट इज बुढ़ा बलंग तापर बैतरणी ब्राह्मणी महानदी एंड देन ऋषिकुल्या ओके so these are the 6 major rivers तुमको यार नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर टा मन रखियार अछि एग्जाम रे आसी पारे ओके कोन रहिला सुवर्ण रेखा बुढ़ा बलंग बैतरणी ब्राह्मणी महानदी एंड फाइनली ऋषिकुल्या ओके कमेंट रे लिखि कि पठाओ मते एबे नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर टा जेते जण अछ समस्त कमेंट रे लिखो नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर कोन
ବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୁଢା ବଳଙ୍ଗ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମହାନଦୀ ଋଷିକୂଟ। वेरी गुड समित, एमती एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, भल से कौन ध्यान देकी क्लास करो, विल डू गुड। ओके, तो आज क्लास रे वी विल स्टॉप हियर। ओके, देन नेक्स्ट क्लास रे वी विल एंटर इनटू ईच रिवर, महानदी ब्राह्मणी बैतरणी बुढ़ा बलंग, ऑल दोज रिवर्स विल टॉक इन डिटेल। कहार ड्रेनेज पैटर्न केमिति रहला, ट्रिब्यूटरीज कोन, डिस्ट्रीब्यूट कोन, सोर्स कोन, माउथ कोन, इंपोर्टेंट प्लेसेस जोटा रिवर बैंक रे अछंती, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, से सब भी देखिबा हमें। ता सहित आ कोन देखिबा ना को जगह रे डैम अछि, को जगह रे को वाटरफॉल अछि, से सब जिंस हमें नेक्स्ट क्लास रे डिस्कस करिबा। ओके, जो छटा मेजर रिवर रहला दैट वी विल डू थ्रू मैप। ओके, एमती पूरा मु ड्रॉ करके तम मानू देखैबी जे महानदी एठो एमती स्टार्ट हेची, आसीची एमती बुल, तापर एमती तारा ट्रिब्यूटरीज बहुत सारा आसंती, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत सारा हेचन, ट्रिब्यूटरीज एमती लागिचंती, एठी गोटे ट्रिब्यूटरी लागिची, एठी आ गोटे ट्रिब्यूटरी लागिची, एपटे भी रहिले बहुत सारा, राइट। सो एमती कौन कौन सब ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज अछंती, we will see in blank map. Okay, so be ready for the next session. Okay, से दिन गोटे पेन एंड पेपर रखी थिबो पाखरे, draw with me, along with me. Okay, जदि भी रिक्वायरमेंट हला से दिन हमें 1.5 घंटा रे भी क्लास हो पछे नबा, और जदि 1.5 घंटा रु अधिक हला देखिया से दिन देखिया रात्रि जदि 10:30 11 जाए होची पछे we will take the class. Okay, ड्रॉ करिया पे टाइम लागिवो तो ऑब्वियसली, राइट। बाकी with this let's end today's class, we'll meet in the next class. Okay, everyone clear? Okay, very good. चलो then next week or after that हाँ आ गोटे जिनस काली सकाळे सी सैट रो क्लास अछि, जो माने वीक अछ देखो मु सीधा कथा कहबी, मोर क्लास रे व्यू बढ़िया दरकार नहीं, तम मानन पई मु कह दोची तीनटा कैटेगरी अछि सी सैट रो। ओके, बस टिके कथा हे जिवा सी सैट विषय, बस टिके कथा हे जिवा सी सैट विषय, देन विल। ओके, सी सैट रो तीनटा कैटेगरी रो स्टूडेंट अछन, और रादर मु तीनटा कहबिनी पांचटा कहबी, पांचटा कहले बेटर, कारण तीनटा कैटेगरी करदेले किछि जण मिसी। पांचटा कैटेगरी कोन, गोटे होची वेरी स्ट्रांग, आ गोटे स्ट्रांग, देन हैव मॉडरेट, हैव वीक, हैव वेरी वीक। हाँ, को माने क्लास करवा कंपलसरी, these three कैटेगरी तम माने क्लास करवा कंपलसरी। ओके, मिस करिवो ही ना। स्ट्रांग कैटेगरी बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दबो हे जीवो। वेरी स्ट्रांग जो माने नॉट ब्रैगिंग हियर, जो माने मो भलिया आई कम अंडर द वेरी स्ट्रांग कैटेगरी, जो माने मो भलिया वेरी स्ट्रांग बोली भाबुजो से मानंगु प्रैक्टिस भी दरकार नहीं, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मु जेबे फर्स्ट टाइम पे मोर कोचिंग नहीं, फर्स्ट टाइम पे सी सेट रो क्लास नहीं थिली सेतिकी, तापरे मु केबे सी सेट पे प्रैक्टिस करी नहीं। ओके, so without that I have always scored above 150, 150 155 मिछो कहीं कहबा जको बड़ करिया को 150 अबव, थरे मोर एक्चुअली जाइतला 155, अदरवाइज ता पूर्वरु ता उपरु सबले 160, तो गोटिए दाग लागि जाइतला। एनीवेज नॉट मच इंपोर्टेंट हियर। तो जो माने ए कैटेगरी रे अछ तो माने देखिया दरकार नहीं, प्रैक्टिस तुम मूड ऊपर डिपेंड करियो, बिकॉज यू विल बी लाइक
तो सब करदेवी एग्जाम हॉल को जाई दरकार नहीं ओके मु भी सेही कैटेगरी रे थिली सो तुम मानू सेतिकी लीवे मिल पारे तो तमे एक्चुअल रे भावुछ जे हां मु सी सेट रे बिना प्रिपरेशन रे 160 पाखा पाखी आनी देबी आखी मुजी की ओके तो से माने करिया दरकार नहीं स्ट्रांग कैटेगरी यू नीड टू प्रैक्टिस तुम माने स्ट्रांग अच्छा फिर भी यू शुड प्रैक्टिस बाकी रहले मॉडरेट कैटेगरी वीक एंड वेरी वीक तीनटा को मस्ट करिवो ओके समित ओके वेरी गुड मु आसुची सर फिफ्थ रे ओके वेरी वीक गॉट इट टाइम 10टा बेले बा हमर जो प्रस्तुति बैच रो तमे YouTube रो देखिनो कि केमती तो कैक्स आईएएस रो चैनल सर्च कर एटा देखि दियो तम मानन पूरा डिटेल लाइव क्लासेस अंडर रे हैव दिस वीडियो ओके ये वीडियो तो बस 10 मिनट रो वीडियो टे तो 2x रे भी करी देखिया चाहू देखि दबो सेतरे हमरो मेंशन भी हेची टाइम टेबल टा ओके सब दिन 10 AM रे रो क्लास हो ओके तो देखो एटा होची शेड्यूल टा ओके मंडे इकोनॉमिक्स ट्यूसडे ज्योग्राफी पॉलिटी सब दिन 10 AM रे ठीक अछि तो सैटरडे दिन सी सेट रो रहइबो सब सप्ताह रे टिल प्रीलिम्स ओके प्रीलिम्स पूर्व दिन मे बी वी विल कीप सम इन नेक्स्ट 4 वीक 5 वीक रे देखिया केमती कोन करिया ओके बाकी टू कम तमरो माने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो सी सेट रे हिजो मैथ रे तमन तो निजको वीक भाबिवनी ओके रीजनिंग मैथ एगोरा करे वीक भाबिवनी तो कॉम्प्रिहेंशन तमरो माने रिलेटिवली इजी रहउची तो कॉम्प्रिहेंशन रे मोस्ट पिलांकर भय न थाए बट स्टिल वी विल डू कॉम्प्रिहेंशन एज वेल तो तीनटा को कैटेगरी रो हबो आई एम प्लानिंग टू डू लाइक मैथ और रीजनिंग रो अधिक क्वेश्चन रहबो सी सेट टी कम रहबो माने कॉम्प्रिहेंशन टी कम रहबो ओके तो काली 10टा बेले देखा हबो ओके लेट्स गो थैंक यू एवरीवन गुड नाइट